everyone. Welcome back to another episode of Mixtape Podcast. This time around, this is a special episode because this is the first introductory episode of a series that we're going to start by the name of Mind Talks. With me, we have today Dr. Tahir Munir, and he is an MBBS doctor, but who has a specialization in psychiatry. So we'll be using this episode as basically a 101 on mental health. Assalamu alaikum. जी अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक ठाक So, as I said, you are an MBBS graduate from King Edward Medical College. Currently, you are practicing in the United States. So, do share what's your journey like? Why did you decide to, pick up psychiatry as your specialization? First of all, I just want to thank you again for doing an excellent job of using the technology and sharing the information. So it's a pleasure and privilege to be here. So, as you said, I graduated, alhamdulillah, from King Edward. And uske baad, when you graduate, so I think a lot of people generally know that you specialize and subspecialize, or we call it super specialization in certain, areas of medicine. So that's what I did, graduated. Then obviously you're exploring the, field and trying to find out. So Pakistan, when I graduated, there was not much, abhi, mashallah, behtar ho rahi hai thode. Situation psychiatry or child psychiatry, but at that time there was not much, talked about, and there was not much options. So when I came here, I started, my course in family medicine. Then I started getting a little more sense, and it's an area of a wide, area that you can explore and learn from. So that's why I decided to get into psychiatry. Because, that's something that I think we're talking in 2022 about mental health. So that area is still, kind of needing a lot more to be done in. So that is why, I switched over my area of, residency. Per maine psychiatry mein residency ki. Then uske baad, alhamdulillah, I was able to, pursue further. When you ek line mein jana shuru karte, then you keep on learning more about it. So when I was doing adult psychiatry, then I realized that things do start very early. Mm-hmm. So that's why I went further into child and family psychiatry. And then I went to Brown for my fellowship. So 2 saal ki fellowship, or we research, paperwork and everything. So alhamdulillah that now I'm practicing both in adult and child or adolescent psychiatry. I see adults, young, chote bache, college students, teenagers. So then I see all that age population now. So my first question would be very basic. I wouldn't say it's basic and complicated at the same time, because as you said, it's 2022, and now specifically, if I'm going to talk about, the situation in Pakistan, now people have just started to openly talk about mental health and, the need that it needs to be addressed and that there are issues. And I think because we started so late, there's a lot of generational trauma that adds to that entire, picture, and people trying to figure out, it gets a bit more complicated. So the first question maybe, because given your medical experience, if you will have to answer this question, that what is mental health? So how would you start? So mental health, again, I'm going to try to explain it. Okay, it's such a broad question to, explain everything. Everyone has a different level of understanding. So I will try to just go with some basic facts, and then I will further, and we can then elaborate on that. So basically mental health, if I define it, is refers to your cognitive, आपकी जो thinking है, आपका behavior, आपकी emotional responses, your psychological, sense of doing, and social well-being. So basically, I think it's all about how we think, we feel, we behave, we react to the situations. And it also, encompasses and helps us to understand how we're going to deal with our stress, how we react to situation, how we relate to one another, and make healthy or unhealthy choices. Yeah. So one thing I would like to clarify, because some people, even here, some people refer to mental health to being absence of a mental disorder, which is kind of a very misleading. Because mental disorder is a separate discussion. Inshallah, we'll be talking about step by step, topic by topic. So that is something that I want to clarify. It's misleading that way. So basically, mental health आपकी affect करेगी आपकी living, आपकी relationships, आपकी even physical health. So मैंने doing it over a period of years, I have started conceptualizing, and that's why I explained that I talk about concept of mental well-being. Mm-hmm. So mental well-being जो है ना वो concept अगर आपको समझ आए कि it is basically a state of being well in which every individual realizes कि उसका अपना potential क्या है, how they can cope with normal,
and stressful life happens. Normal stress hota hai, normal changes hoti hain, difficult situations hoti hai. How you can be productive, you can be fruitful, and you can able to make contributions to your environment and to your community. So that is, the concept of well-being is more important than just thinking about mental health. So इसलिए लोग people just think, oh, अच्छा जी मुझे severe depression नहीं है, तो that is okay, that is not. So that is a total different contrast. It's the same way, like, अगर आपका, you have a blood pressure reading, अगर आपको hypertension नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना blood pressure का ध्यान नहीं रखेंगे. You still have to take care of you. Yeah. So obviously you've touched upon the baseline of mental health. So if we say, why is it important? And I know this is again also a very broad question of why mental health is important, but also maybe if you can, touch upon the basic needs, because you said, as you shared in your introduction, you're looking after patients who are like in the younger age group, teenagers, because usually whenever somebody say mental health, so everybody generally, I think, associates it with, if it's not like some actual, mental condition, a disorder, it's considered, जब teenagers होते हैं तो तब शुरू होते हैं issues with, because all of the other hormonal changes जो हो रही होती हैं, so that leads to things XYZ. But share how do you see why it's important, and also how it's connected to one's physical health? When I ask at different forums the importance of mental health, so I only say it because it matters. And why it matters, because if you're not in a good state of mind, everything that you do, from your beginning of your daily routines, your communication, you're at a job, your relationship, everything is impacted. Everyone, I think, can sense this now. You're not in a good state of mood, aapka mood kharab hai kisi baat pe, to everything is ruined, right? So that is very important to understand कि ये क्यों concept important है, कि why we have to be in a good state of mind. उसके बाद concept of जो balanced healthy life हम बात करते हैं ना, people talk about eating organic food, ये करो, वो करो, exercise करो. That is all geared towards having the mental peace, ताकि every aspect of your life is in a good harmony, it's in a good balance. क्योंकि अगर वो नहीं होगा, it impacts all the expectations जो आप अपने लिए set करो, as a student, as a working at a job, in a relationship, or expectation that people or community or society have from you. So that is very important कि हमारी जो perception है ना, main perception of our well-being, it affects your self-worth, आपका potential, आपका sense के balance किसा करेंगे. देखिए life में their desires, their needs, अगर आप उसको balance नहीं कर सकते, अपने goals को, अपने efforts को, अपनी success को, then you're going to be in a mental agony. So that is why it is important to have a very well-balanced way of going through your day-to-day routine and day-to-day functioning. Mm-hmm. That is very important. People have seen, like, and there's a very, strong correlation when you were asking about the second part of the question, that how it affects the overall health. A सबसे important fact, what I have learned over a period of 20 plus years of working as a psychiatrist is that the brain is the most powerful, most complicated, and yet the most delicate organ of the human system. And I can go back, from the start of the biology, given the product of, given the, start of the fetus is, baby jab banta hai, the neural tube we talk about, कि उस वक्त अगर कोई exposure हो, कोई damage हो, कोई drugs का, कोई किसका, तो it creates a long lifetime damage to the brain. The brain got damage, even has, people have head injuries, कोई, accident ho, that you're exposed to any toxins, anything. The brain is damaged. Brain is really protected well. Because brain is your supercomputer. Brain is a supercomputer. It's a super command center, which is regulating every millisecond of our lives. So from the things that we can control, things we can't control. For instance, we talk about, physiological explanation, involuntary and voluntary control. Okay? Giving an example, we both are talking, you're sitting in a comfortable environment. If I ask you, hey, Fatma, can you or can I lower my heart rate to 23 and then bring it up to 80? We can't do it. Because that is an involuntary control, and that is still regulated in the centers in the brain, depending on all the level of oxygen that we're getting, what kind of an exertion we're doing, what is the blood supply, everything. Versus voluntary control, like if I'm waving my hand, there is a voluntary effort that I'm making. It is still happening in my brain. The brain is sending signals from the premotor cortex, area of the brain है जो motor cortex को जहाँ पे सारे muscles control होते हैं, message जाता है, and within less than milliseconds, इतने muscles, they're a group of muscles, then I can wave my hand. We take it for granted कि भाई, Allah
people like who have any neurological defects, फालिज का अटैक इस तरह जब हो जाता है, you can see how damaging it is कि you can't move your arm, right? So ये concept है ना कि लोगों ने अभी तक इस चीज को realize नहीं किया कि brain को protect करना और brain की जो importance है, that affects the every system of your life. क्योंकि अभी से let's take an example, जब stress की हम बात करते हैं, लोग कहते हैं stress is a very broad term. So I'll walk you through how the physiological effects, or how physically किस तरह affect करती है mental health. So let's say you have a test coming up, you're preparing for it. That test has so much to do in your life. आपको decide होगा आपको admission कहीं मिलेगा नहीं मिलेगा. You're preparing, you're working hard. आपकी sleep खराब हो गई है, आप खाना नहीं खा रहे, you're getting so nauseated, आप irritable हैं, आप moody हैं, लोग पूछ रहे क्या है, आप बात नहीं करना चाहते किसी से. So all the physical effects, and we must have heard that expression जो कहते हैं कि जी sick to stomach or having nervous diarrhea. So वो क्या है, वो basically ये है कि आपके brain के ऊपर से जो सारा system चल रहा है, it is affecting your digestive system, it is affecting your respiratory system, it is affecting your hormone rhythm, it's affecting your sleep cycle. So everything is all connected. So a lot of times होता है कि when I talk to people, and even then, that's what I'm saying, like, we need to educate, the community and society about it, or, a lay person who's struggling, कि ये नहीं कि brain आप सिस्टम से अलग अगर आप ब्रेन को अलग रख के ट्रीट कर रहे हैं फिर वापस ब्रेन को फिक्स कर दिए. नो, ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है मेंटल वेलबींग का, मैं कह रहा हूँ, इट इज अफेक्टिंग ऑल योर होल लाइफ साइकिल. वी नो के पीपल हु आर वी कॉल देम टाइप ए पर्सनालिटी, पीपल बड़े हाई स्ट्रांग और बड़े हर वक्त पुशी और बस दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका काम खराब नहीं होना चाहिए. दे हैव अ हाईएस्ट रिस्क ऑफ हैविंग हार्ट अटैक्स, दे डाई अर्ली. People who have this kind of a problem, they have high problem of gastrointestinal, जिसको कहते हैं GERD, gastroesophageal reflux problems, उनको GI की disturbance होती हैं, उनमें chances, diseases के goes high because the stress hormones are constantly high. तो उनकी blood pressure changes, उनकी blood sugar changes, उनके chances of getting cancer. So all those things are all interlinked. और अब है ये कि now getting into that 2022, now I can literally show you on a brain map कि भाई what part of brain is doing what. Because brain में इस वक्त, as a psychiatrist, we still are finding out. If I look back, जो मेरा text था 10 years, 20 years ago, जो हमारी books थी जिसमें हम पढ़ते थे, उसमें नीचे एक बड़ा fine print होता था, this part of the brain may be associated with this. उस वक्त research हो रही थी. Now we actually know what that part of the brain is doing. उसके लिए हमारे पास targeted medications available हैं. अब now we can put the symptoms together कि जो complicated symptoms होते हैं उनके लिए treatment किस तरह करनी है, क्योंकि brain में अभी भी, that's interesting कि अल्लाह सुब्हान ताला ने ऐसी जबरदस्त चीज बनाई कि अभी brain में there are still areas जिनको हम कहते हैं silent areas, जिसको हमें अभी पता नहीं, हमें नहीं पता, but that part of the brain is actually doing something. Lekin we have not got to that point. So once we talk about different topics, I will explain it. It's amazing to see कि different parts of memory की बात करते हैं कि memory के areas कहाँ store होता है किस तरह. So it is an amazing concept कि अगर आप brain को ignore करेंगे, then you basically ignoring your own health. आप बेशक जितना कि जी मैं अच्छा खा रहा हूँ, मैं जनरली खाना सिर्फ salad खाऊंगा, organic खाऊंगा, लेकिन but if you're not really connecting everything, you're basically compromising your own physical health. So basically mental well-being leads to physical well-being. So everything is all connected. Yeah, so, when you were sharing this, I was remembering because my mom was an anatomist as well. वो जो Grey's Anatomy को class वगैरह के लिए खोल के बैठी होती थी and used to figure out कोई minor सी vein या उस पे कोई नई चीज़ उन्हें याद like बेहतर समझ आती थी, तो she used to also be very intrigued, and she always used to say कि वो अल्लाह मियाँ ने इतना complicated और इतना complex system बनाया हुआ है कि this is like मुझे पता नहीं कितने साल हो गए हैं पढ़ाते हुए, but अब मुझे इसकी ज़्यादा बेहतर समझ आई कि इसका क्या So yeah, that's a very interesting thing. I think isko bhi hum at one point explore karenge, and I'll ask you to share some images as well, jo ki phir we'll put it up on our social media of the brain mapping और इस तरह की जितनी सारी वो AI और tech भी use होना शुरू हो गई है. So you obviously explained pretty well कि how it's basically a holistic health, and जिस तरह आपने start में word use किया well-being का, that is what is the right terminology here. But let's move on to how one can actually go and get started with the process. So when we say somebody needs to take care, we need to take care of our mental health, what are the starting points? Obviously, as we
the series progresses, we'll be taking, a deep dive into each of the specific and more, in-depth her individual aspect of it. But generally, for example, somebody जिसका अभी तक कोई किसी को identify नहीं हुआ या he has not realized the fact that, maybe we need therapy या कुछ, what are the basics जो किसी को भी हर कोई कर सकता है या हर किसी को करने चाहिए? So, when we talk about, you can put it in this way, prevention. Okay? We know that prevention is better than cure. It's an old saying, and it is logic in every aspect that we do. Okay? If you're going to be eating healthy, you're exercising, your physical health better hogi, versus if you're very bad lifestyle or you're smoking, what are the effects of bad habits, if you say. So the mental health की बात और mental health की बात है ना, I start by very simple measures. सबसे पहला जो measure है ना वो है staying in routine and on a rhythm. Okay, and I explain it a bit. कि rhythm जो है वो, if you look around, के again, like alhamdulillah, we have a better concept of life as a practicing Muslim, के जो अल्लाह ने concept दिया, जो nature का concept है वो rhythm का है. ठीक है, आप rhythm देखें कि there's a natural mechanism of things happening. There is day, there is night, there is summer, winter, weather changes. कहीं पे भी disruption होती है, disrupts the whole thing. So we are basically a natural creature, and we have to stay in the natural rhythm. तो इसलिए we know that, काफी लोगों ने must have heard that term, इसको कहते हैं natural clock या biological clock, the body clock, उसको कहते हैं circadian rhythm. अब let me explain circadian rhythm का क्या मतलब. Circadian rhythm ये है कि there is a natural cycle of physical, mental, behavioral changes जो हमारी body goes through every 24 hours. और circadian rhythms are mostly affected by light and dark. काफी लोग we travel, when we go across, अभी आप हमारे यहाँ पे तकरीबन 9:30 हो रहे हैं, you're 7:30, so I'm at a different time zone. But if I'm going to take a flight and get there, जिसको जेट लैग कहते हैं, वो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो रीसेट होती है सनलाइट की वजह से. ठीक है, अभी वी कैन टॉक अबाउट दैट मोर स्पेशली जब हम टीनेजर्स की बात करेंगे, उनकी स्लीप और उनके डिप्रेशन उसका. तो बायोलॉजिकल क्लॉक का जो रीसेट होना है ना, दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम. एंड वी सी दैट अगर मतलब तो इतनी मतलब के इलैबोरेट हमने स्टडीज कर ली हैं और हमें पता है जिस तरह बाज लोग नाइट शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जो रात को काम करते हैं, रात को 7 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक, उनकी लाइफ साइकिल का बिल्कुल अपसाइड डाउन होता है, क्योंकि देर बेसिकली वर्किंग ऑपरेटिंग ऑन अ टोटल डिफरेंट टाइम फ्रेम. उसमें लोग जो कंप्यूटर आईटी सर्विसेज में लोग रात को काम करते हैं, सुबह उन्होंने फिर अपना घर का काम करना होता है, फिर या पीपल जो हु आर वर्किंग एट सिक्योरिटी गार्ड्स और रात की जो इनकी जॉब्स होती है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हाउ बायोलॉजिकल क्लॉक इज अफेक्टेड एवरीथिंग. अब उसमें होता है कि स्लीप वेक साइकिल है आपकी, ठीक है, आपकी बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन है और आपके हार्मोन्स हैं. ठीक है, ये तीन अब चीजों को मैं थोड़ा सिंपली एक्सप्लेन करूंगा कि स्लीप वेक साइकिल ये कि एंड इट इज प्रूवन, एंड इफ यू ट्राइड, एंड आई एक्चुअली व्हेन आई टॉक टू माय पेशेंट्स कि वो स्लीप मेडिकेशन ढूंढ रहे थे, कहते हैं, मैं कहता हूं कि अगर जिसको कहते हैं हम स्लीप हाइजीन, which is a very important thing, that is same way as we talk about personal hygiene. Because again, like, it keeps on going into different topics, but I'm going to try to keep it simple. कि अगर आप अपने biological clock ऐसे set करें कि if you go to bed on a fixed time, आपकी body would respond to that. You do not even need to put an alarm. आपकी सुबह उतने बजे आंख खुल जाएगी. So sleep cycle का important देखें, हर sleep का जो toddler है उसकी sleep cycle और requirement different है. एक तो एक उसने कहीं काम पे नहीं जाना, वो 12 घंटे भी सो सकता है, 16 घंटे, ठीक है, बट अल्लाह मैंने बड़ा जबरदस्त नेचर का सिस्टम सेट किया कि उसकी बायोलॉजिकल क्लॉक उस पे सेट होती है क्योंकि उसको इतनी रिक्वायरमेंट होती है. टीनेज ईयर्स में इट समटाइम फ्लिप्स आउट, बट यू स्टिल नीड एन अमाउंट ऑफ स्लीप टू कीप थिंग्स रेगुलेटेड. अगेन वही चीजें, आपकी स्लीप साइकिल, आपका हार्मोन बैलेंस और आपका जो रिदम है, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल सारा. जब आप एडल्ट हैं तो फिर आपकी 7 to 8, 5 to 6, 7 to 8 डिपेंडिंग ऑन. एक तो ये उसमें फिर आती है कि there is also individual differences, क्योंकि हर ये नहीं है कि हर बंदे का exactly होता है, individual differences हैं. फिर उसके बाद depending on age एक difference आ गया, फिर individual differences आ गए, फिर life cycle जिसमें बात का पता है कि I always advise people कि लोग होते हैं weekend होते हैं, रात 2 बजे तक जाग रहे हैं, सुबह crash, then get up. Never do that. Stay as close to your biological clock rhythm if you want your system to work. अब ये तो हो गया sleep और wake cycle का. दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है टेम्परेचर रेगुलेशन, विच वी डोंट थिंक अबाउट. अगेन, लाइक आई एम अ फिजिशियन, सो आई हैव टू थिंक अबाउट द होल सिस्टम. बाज लोगों को
प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, उनको थायराइड का प्रॉब्लम शुरू होता है, उसके बाद उनकी स्लीप खराब होती है, देन दे गेट डिप्रेस्ड, दे आर मिजरेबल, सो आई डू द इवैल्यूएशन, देन आई डिसेक्ट इट आउट कि भाई कहाँ से क्या, व्हाट इज हैपनिंग. जो टेम्परेचर रेगुलेशन है, दैट इज आल्सो वेरी डिपेंडेंट ऑन योर बायोलॉजिकल रिदम. क्योंकि फॉर इंस्टेंस लाइक यहाँ पे इट्स सो कोल्ड, यू नो, मैं सर्दी के बारे में बताऊं तो मैंने कहा कि वहाँ पे मैंने बाकी सर आई डोंट नो कि लाहौर में भी काफी सर्दी है, लेकिन दैट इज बेसिकली यू आर कवरिंग योरसेल्फ व्हेन यू गो आउट. मॉर्निंग टाइम में आपकी बॉडी रेगुलेशन डिफरेंट है, बट व्हेन यू गेटिंग रेडी फॉर बेड, यू गोइंग टू स्लीप, you change your clothes, you're in a different, you know, temperature zone, the body cool down and go through the whole, you know, 7 to 8 hours of night time. उस टाइम होता क्या है, जो आपके टेम्परेचर रेगुलेशन है वो रेगुलेट करी बॉडी को, लेकिन हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं. अब हार्मोन रिलीज को जो कि मतलब कि व्हेन आई वर्क विद, यू नो, यंग चिल्ड्रन, यू नो, टीनेजर्स, वो कि पीपल हैव इग्नोर्ड इट सो मच, अब लोगों को थोड़ा होश आना शुरू हो कि भाई व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आपकी हार्मोन रिदम, क्योंकि सिस्टम वही अल्लाह ने सेट किया हुआ कि रात के टाइम पे ऊपर से ब्रेन में पाइनियल ग्लैंड वहां से रिलीज शुरू होता है, इट अफेक्ट्स योर थायराइड, थायराइड से आगे जाता है बाकी आपके सारे जितने आपके रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, आपके बाकी जो हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन और सारा जितनी रेगुलेशन है. हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स आर, यू नो, you can say, simply saying it, these are chemicals of the body that regulate the whole system. अब होता है कि सारी रात रिलीज हो रही है, उसके बाद वो गट में जब आप सुबह उठेंगे, नाश्ता करेंगे, that's why breakfast is important, because it needs energy to pull all the hormones to go into the right directions. अब giving an interesting example here कि लोग इस चीज को बिल्कुल समझते हैं कि lot of times when I work with, you know, young females, उनको weight loss का बड़ा problem कि जी they can't lose weight anymore. आपने अगर अपनी biological clock खराब कर ली है younger years में, so आपका hormone system खराब हो गया. अब hormone system की वजह से you're gonna keep on struggling. देखें, it takes time for the body to reset back there. फिर आपको जो ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी. तो इसलिए sleep rhythm number 1 is very important if you want to start really being in a good state of mental well-being. दूसरी चीज आती है, उसको मैं कहता हूँ कि anchoring and grounding. अब वो कॉन्सेप्ट ये है कि we all have, you know, individual grounding resources कह लो, you know, relationships कह लो, activities कह लो. अब grounding ये होता है कि it's a simple strategy है जो कि that will help you to detach from जो कुछ हो रहा है आपकी जिंदगी में, anything that is giving you emotional pain, anxiety, depression, you know, negativity, basically disconnects and brings you back to the ground, to the point जिसको कहते हैं ना reset आप करते हो अपने आप को. So that reset has to keep on happening throughout the day. Why? क्योंकि it is basically your own, and you have to learn it, consciously do it, फिर आपकी unconsciously आपकी habit बन जाती है to distract yourself from focusing कि एक चीज जो आपको पुल कर रही है और इमोशनली आपको डिस्टर्ब कर रही है and you're frustrated, आप उसको छोड़ते हैं. जिसमें होता है कि ना, सिंपल एग्जांपल, जब आप पढ़ रहे हो, if you can't really, आपको, you know, you're putting half an hour, आपको समझ नहीं आ रहा कौन सा, it's better to stop it, take a brief, you know, break, refresh and come back. ठीक है. होता है कि ब्रेन को रीसेट चाहिए, क्योंकि ब्रेन में होता है कि ब्रेन इज अ सुपर कंप्यूटर, आप उसको प्रेस करके रीसेट नहीं कर सकते, लेकिन यू हैव स्ट्रेटजी. सो ग्राउंडिंग और जो एंकरिंग टेक्निक्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब उसमें जो इंटरेस्टिंग चीज आती है ना, व्हेन वी वर डिस्कसिंग अर्लियर अबाउट दिस टॉपिक, आई थिंक इट्स अ वेरी सेपरेट डिस्कशन वी कैन डू. Faith is a very prime and strong grounding strategy. Talk about faith or belief system. Or, you know, over 20 years of my work, when I do the initial evaluation, I always, you know, ask people about their faith and what is the belief system. क्योंकि होता है कि ये it gives me the, you know, assessment के how to gather their belief. क्योंकि जब down the road treatment में कहीं पे कोई चीजें मतलब ऊपर नीचे होती हैं या stress आता है, तो I can use that as a tool. And it's a very strong tool. जो है ना कि reverting back to your faith and belief system. And I can tell you, like, for 20 plus of years, I've seen that people who are stronger and closer to their belief system, they do well. So बाज़ का होता है, interesting क्या होता है कि बाज़ लोग कहते हैं कि oh no doctor, I'm just a spiritual person. I don't follow any, you know, formalized organized religion, but I'm just a spiritual person. अब उसमें interesting चीज क्या आती है, जो spiritual person हम जिसको कहते हैं, जितने सारे concept है, देखो, meditation, ठीक है, mindfulness, अब वहाँ पे काफी लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करना शुरू किया, योगा करते हैं लोग, बैठते हैं जितनी देर, वो आप बेसिकली कर क्या रहे हैं, आप एक तरह से अपने आप को देखें, आप एनवायरनमेंट से निकाल तो नहीं सकते, बट बेसिकली यू आर ट्राइंग टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग. और वी यूज दैट इन टेक्निक्स एंड लॉट ऑफ थेरेपी हम करते हैं एंजाइटी के लिए और डिफरेंट पीटीएसडी, डिफरेंट डिसऑर्डर्स के लिए, दैट यू गेट ग्राउंडेड.
जब when you get grounded, so you get refueled. जब आप refuel होते हैं, then you come back with a more positive energy, and positivity brings everything back into your flow of things as compared to just constantly, आप constantly frustrated हो रहे हैं, negative हो रहे हैं, then you're giving up. That's how people get to the point of severe anxiety. Then you know what they say, it's better to be gone than to be living like this. So that's when we see the worsening of depression sometimes happen. People think about suicide, you know what, life over, job खत्म होगी, अब जिंदगी खत्म. So that is where it is grounding down. फिर आज ये तीसरी चीज आती है रेगुलर एक्सरसाइज. अब वही होता है कि लोग बात करते हैं जी डॉक्टर है कह रहा है कि जी एक्सरसाइज करो. Even 30 minutes of walk every day, ठीक है, walk really boosts your mood, and we have studies through it. अब उसमें एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना क्या है कि लोग कहते हैं जी मैं तो सारा दिन काम पे, मैं मैकडॉनल्ड में काम करता हूँ, तो मैं चल. दैट इज एक्सर्शन. आप कॉन्स्टेंटली अगर काम कर रहे हैं, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी आप डिलीवरी का काम कर रहे हैं, कहीं भी कर रहे हैं, दैट इज एक्सर्शन. आप बैंक में कहीं पे भी, वो आपका काम जो है वो एक्सर्शन है. दैट्स नॉट एक्सरसाइज. एक्सरसाइज जो हाफ एन आवर वो है ना कि आप वॉक पे निकल गए हैं, बाहर वॉक किए या पार्क में चले गए किया या जॉगिंग की है, वो होता है कि अगेन आपने डिस्कनेक्ट किया अपने स्ट्रेसर से और आप अपने आप को ना ओरिएंट कर रहे हैं बैक टू ग्राउंडिंग. अब उसमें चक्कर क्या देखें, आप 2-3 घंटे आप काम पे होते हैं और आप कॉन्स्टेंटली चल रहे हैं, आप एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जा रहे हैं, आपने फिजिकल एक्सर्शन तो की है, लेकिन आपका ब्रेन उस वक्त डिफरेंट फॉर्मेट में काम कर रहा है. इट इज नॉट गिविंग दैट ग्राउंडिंग, पीसफुलनेस और ईज. फिर आता है ईटिंग हैबिट्स, हेल्दी ईटिंग और टाइमली ईटिंग. अगेन वही वाली बात है कि बॉडी एक सिस्टम है, उसका ध्यान रखना. It's up to us. I can eat, bad food 5 times, 6 times a day. I do not exercise. My body, my responsibility, my outcomes, right? That's why staying hydrated, eating healthy, staying on a good meal, sleeping on time, we talked about. और उसके बाद important चीज है जो कि we have talked about in I think previous couple of episodes कि COVID से कैसे हुआ, relaxing techniques. अब रिलैक्सिंग टेक्निक्स और रूटीन्स आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ भी कर सकते हैं, फ्रेंड्स से करते हैं. देखें जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, आप कनेक्ट करते हैं, आप बात करते हैं, तो दैट इज एंड वी कैन टॉक अबाउट लाइक हाउ डीपली इट चेंजेस द होल न्यूरोकेमिस्ट्री. रिलीज हार्मोन्स कौन से रिलीज होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स जस्ट कॉज दिस रिलैक्सेशन. उसके बाद एक और जो 5वां पॉइंट है वो है कि सेटिंग गोल्स एंड प्रायोरिटीज. अब वही वाली बात है कि आप सुबह उठे, आपको कुछ नहीं पता आपने दुनिया में किधर जाना, क्या करना है. You're going to be just sitting vacant, you don't know लाइफ कहाँ जाएगी, होगा नहीं होगा. शॉर्ट टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गोल हर एक का होता है, ठीक है, कि मैंने भाई एक दिन ऐसे पहुंचना है, या मैंने ये करना है, या मैंने ये खरीदना है, या मैंने ये बनना है, या मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना है. शॉर्ट टर्म गोल्स. अब शॉर्ट टर्म गोल्स क्यों इंपॉर्टेंट है कि आप किसी को तो बता सकते हैं. पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ, आई वर्क विद फैमिली सिस्टम्स, कि अंडरस्टैंडिंग योर नीड्स एंड वांट्स and finding a very good balance is very critical. देखिए wants तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए. COVID has really flipped over the life for everyone. So having the fine balance कि आपके what you really need, what you really want, how you're going to get to your wants. So that is a very day-to-day thing कि आप छोटे गोल सेट करें. क्योंकि जब होता है ना कि आप एक बड़ा गोल सेट करें, भाई मुझे ये मिलेगा तो मैं खुश होऊंगा, तो वो नहीं हुआ तो आपने बस throw in the towel and आप कहते हैं लो जी जिंदगी खत्म, अल्लाह हाफिज, गया जी, मैं तो कुछ नहीं हो सकता. दैट इज वेरी डेंजरस थिंग. फिर अब प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, थैंकफुलनेस, जिसको हम वैसे मुसलमान कहते हैं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ शुक्र है, कंटेनमेंट. आई थिंक लाइक इट्स अ वेरी ब्रॉड टॉपिक. आई थिंक वी कैन डू अ सेपरेट डिस्कशन ऑन दैट. फिर फोकसिंग ऑन पॉजिटिविटी, क्योंकि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि व्हाट इज गुड, व्हाट यू हैव वर्सेस व्हाट यू डोंट हैव. क्योंकि दिस इज अ ह्यूमन फ्लिप माइंड. अगर आप जो चीज आपके पास है, जिसमें वो कहते हैं ना हाफ ग्लास फुल, ठीक है, ग्लास हाफ फुल, तो वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ है, क्योंकि दैट रियली जनरेट्स द पॉजिटिविटी, आइडियाज, द थिंग्स. क्योंकि आप ये कह लो जी ये है ही नहीं, मुझे तो कभी मिला ही नहीं, आप एक ऐसे क्विकली जाते हैं नेगेटिव उस पे ट्रैक पे, कि वहां से देन पुलिंग बैक इज वेरी डिफिकल्ट. सो दैट इज वन थिंग. सबसे लास्ट बट वेरी लीस्ट बट नॉट, आई वुड से लास्ट बट it is the most important, which I have seen over the last 2 years, is staying connected. Because human being is a social animal, और we have now proven it. अभी तो papers आएंगे, हम लिख रहे हैं, I can tell you what, it's coming to 2 years of my own observation कि मेरे अपने patients की जो prime importance है ना human connection की, that is a very major factor in our well-being.
staying connected to your loved ones, आपके friends, how you relate to people. अगर आप isolated बिल्कुल होना शुरू हो जाए तो it's gonna push you to the very low point very quickly. So I hope like I did not go in too much detail, but these are good, like I think starting points, and इनमें से ही I think I'll be when I'm like going back to this episode, इसमें से और ज़्यादा 8-10 episodes तो इसी topic में से निकल आनी है आगे से. So closing off this episode, another I think 101 question जहाँ पे I think we can end, and then we can take it from the next episodes thereon. Psychiatrist और psychologist में difference क्या होता है? Yeah. So psychiatrist, Padma, I'm a psychiatrist. So basically I went to all years of schooling, then I went to med school, medical college, 5-6 साल वो, उसके बाद फिर house job, the residency. When you finish from medical school, then you have an option, as you're talking about, कि आपने किस चीज़ specialize करना है, either आपने medicine में जाना है, surgery में जाना है, dermatology, ophthalmology, आएगा ENT, तो उसमें psychiatry, फिर I picked up psychiatry. अब psychiatry में ये था कि then is additional years of 4 years of additional training, exams, fellowship, paper writing, presentation, everything. 4 साल फिर मैंने वो training की. So then you become a psychiatrist. उसके बाद when I was working, then as I said earlier, तो मैंने कहा कि नहीं भाई ये तो चीजें बड़ी जल्दी start होती हैं. Then I did additional years of training and fellowship into child and family psychiatry. वो फिर 2 साल और training थे additional. फिर वही boards दो, exam दो. So basically psychiatrists, when we are going through training, we are physicians. So I can prescribe medications and I know the whole system because I'm a doctor. And then brain, as I was saying, the brain is connected, that I take care of the brain while taking care of other things and aspects in place. And then I can prescribe medications, anything from depression, anxiety, bipolar, schizophrenia, all the medicines psychiatric needs के लिए. Then we go through extensive years of training for psychotherapy, how to really connect with people, how to talk to people, implement जो मैं थोड़ी सी topics अभी बात कर रहे थे, कि how to really conceptualize जो mind है. Because brain, I take care of brain being a psychiatrist, and mind is something that is, brain, but it is how the psychological aspects of all the conflicts and everything. So we are trained to do both therapy and medication. While psychologists they're also called doctors, but they're PhD, they're doctors of philosophy. So they go to school and do intensive years of therapy training. So they are therapists. So they cannot prescribe, but they do the therapy part of it. So sometimes we do collaborate. Like वो therapy करते हैं psychologists, और दूसरा they do the psychological testing. उसमें होता है कि बात का when we do in clinical assessment, जैसे मैंने अगर किसी बच्चे को evaluate किया या किसी adult को, तो I need a little more specific कि भाई मैंने अगर school system के साथ काम करना है या मैंने इसके लिए extra resources ढूंढने हैं, so I would send them to a psychologist who would do a neuropsych testing. तो जो ना उसमें एक बड़ी detailed testing होती है, कंप्यूटर पे आप fill करते हैं, performance form fill करते हैं, then collaborate, then a report is generated, जिसको कहते हैं psychological report. उसमें ये होता है कि पता लगता है कि जी इस बच्चे का IQ कम है थोड़ा सा, इसकी reading difficulties हैं, इसको anxiety का ये problem है. So then I use that information to come up with a treatment plan with medication to get things better. The psychologist basically is focused on therapy and psychological testing, while the psychiatrist is equipped with both prescribing medications as well as doing therapy. So just like an additional clarification on this, जैसे doctors, obviously in America, I'm not really sure, because a few months ago, and this is a recurring conversation whenever mental health का एक आता है पाकिस्तान में, कि वही accountability का थोड़ा सा issue है from the like practitioners के side से. So that is why I basically asked कि psychiatrist or psychologist का basically difference क्या है. Because now recently जब यहाँ पे लोगों को थोड़ी सी awareness ज़्यादा हुई है, people are looking for resources, given कि resources अभी इतने ज़्यादा नहीं है, so वो at times confusion होती है, and we will discuss a few specific cases in the coming episodes. But just to understand what international practices are, they said doctors का they have an accountability board. पाकिस्तान में जैसे PMDC पे आप doctors register होते हैं, and obviously वो system में glitches तो जितने हैं, but you can actually report or complain about a doctor. तो जो psychologists होते हैं, because they are giving therapy and just given कि it's a sensitive situation, I'm sure not every field जिसमें PhD होती है वहाँ पे इस तरह का accountability setup होगा, but specifically with psychology जहाँ पे its interaction and human life is involved,
उसका कोई क्या accountability system क्या है? नहीं, उसका दोनों वाला जो अकाउंटेबिलिटी है ना, क्योंकि इट्स आई नो लिटिल नॉट कॉम्प्लिकेटेड बट अ लिटिल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट समटाइम कि अकाउंटेबिलिटी एक तो पर्सनल लेवल से शुरू होती है, ठीक है, पर्सनल लेवल कि आर यू रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, किसी भी प्रोफेशन की, ठीक है, नॉट टॉकिंग अबाउट डॉक्टर्स, किसी भी, अगर आप बैंक में काम करते हैं, अगर आप किसी उसमें फाइनेंस इंडस्ट्री में किसी में, तो एक जो पैरामीटर्स हैं, गोल्स हैं, और उसके बाद देयर इज अ वे, कोड ऑफ एथिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है, तो वो हर एक का है, वो मेडिसिन का है, जैसे आप कहें पीएमसी है पाकिस्तान में, यहाँ पे है लाइसेंसर, आप लाइसेंस आपका वो होता है, अगर आपका खुदा कोई प्रॉब्लम हो तो एनीवन कैन रिपोर्ट दैट एंड देन दे डू इंक्वायरी और इतना सारा कुछ। तो साइकोलॉजिस्ट का भी होता है, उनका भी जो बोर्ड है, व्हेन यू आर सर्टिफाइड थ्रू स्कूल, क्योंकि ये नहीं कि आप दरवाजा खोलें कि चलो जी मैं थेरेपिस्ट में काम शुरू, दैट्स नॉट लाइक, यू गो टू एक्सटेंसिव इयर्स ऑफ ट्रेनिंग, फेलोशिप, और वही आपकी बात है कि यू आर डेफिनेटली डीलिंग विद वेरी एक्यूट सिचुएशन समटाइम्स, देखिए ना, व्हेन आई डील विद, अब मैं तो इन डिफरेंट फील्ड ऑफ मेडिसिन, पहले सर्जरी और न्यूरोलॉजी बारे में, चलो उसको लगता है लाइफ डेथ की सिचुएशन डिफरेंट होती है, बट इसमें भी व्हेन आई एम इवैल्यूएटिंग अ पर्सन, I have to make that in time decision कि whether this person is going to be safe to go home or not, or this person needs to be admitted, ठीक है, the same thing psychology, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और someone is expressing suicidal thoughts या someone is harming themselves, so you have a responsibility towards that person or that family, right? तो उसमें भी accountability है। अब unfortunately वो ये बात है कि अमेरिका हो या पाकिस्तान हो, some people don't care about it, लेकिन ऐसी बात नहीं है। When you have a license and you went to school and then you have practicing way कि आप प्रैक्टिस हॉस्पिटल के थ्रू कर रहे हैं या इंडिविजुअली कर रहे हैं, आपकी अकाउंटेबिलिटी है। तो वो आई नो कि आई थिंक यू हैड मेंशन्ड टू मी ब्रीफली कि आई नो यू कैन टॉक अबाउट इट, बेसिकली आई थिंक मेकिंग अवेयरनेस फॉर द आवर पीपल के पाकिस्तान में हमारी जो फैमिलीज हैं कि भाई डोंट जस्ट मुंह उठा के किसी जगह, ऑलवेज इवैल्यूएट कि आप किसके पास जा रहे हो, समवन इज क्रेडेंशियल्ड और नॉट, क्योंकि आई नो अनफॉर्चुनेटली देयर वाज एन इंसिडेंट, आई नो इट वाज ऑल इन द सोशल मीडिया एंड ऑल ओवर द ग्लोब, so I think that is important to also talk about. Thank you for your time. This was insightful first episode, and really looking forward to this series. Hopefully, we'll have enough informational database that people can, get some guidance and get help. And thank you.